Paragraph is, as we burn fossil fuel, we release carbon dioxide and other heat absorbing gases that cause global warming. तो आमे जितबेले बर्न करछो फॉसिल फ्यूल तो सेटा कोन करछि अधिक ग्लोबल वार्मिंग कॉज करछि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करिकी. Okay, then and may bring about sea level rise and catastrophic क्लाइमेट चेंजेस. सो कौन आम सी लेवल को सेटा राइज कर दौर बढ़े दौर ग्लोबल वार्मिंग रे जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाऊँगी सी लेवल राइज कराऊँगी कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट चेंज माने गोटे वास्ट लेवल रे क्लाइमेटा चेंज हो जाऊँगी सडनली. Acid formed in the air as result of fossil fuels contributions already have caused extensive damage to buildings, materials and sensitive ecosystem in many places. So कौन एसिड जो फॉर्म होची एयर रे तो सी कौन करुची ना जोटा कंट्रीब्यूटेड बाय फॉसिल फ्यूल्स बहुत किछि माने मॉन्यूमेंट्स डैमेज कर दोची बिल्डिंग मटेरियल्स को डैमेज कर दोची इकोसिस्टम को बहुत प्रभाव पकोची. देन continued fossil fuel use without pollution control measures could cause even more extensive damage. तो आमे जदियो किछि स्टेप्स नबानी अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल यूज आउ सेंती पोल्यूशन कंट्रोल बिना ताकू यूज करी चलिबा तो बहुत सारा डैमेज भी पहुंचे पारिबो. क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स सच एज chlorofluorocarbons used in the refrigerations and air conditioning also contribute to the global warming as well as damaging the stratospheric ozone that protect us from cancer causing ultraviolet radiation in sunlight. So कौन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अच्छी जोटा आम रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर्स मानकर यूज करुचु तो सेटा भी कंट्रीब्यूट करुची टू ग्लोबल वार्मिंग जोटा आम स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन लेयर जो ओजोन लेयर अच्छी सेटा को कौन करुची सेटा को डैमेज कर दौची जो होल्स हो जाऊँगी आम यूवी रेज रु प्रोटेक्टेड हो पारुना आमको कैंसर हो जाऊँगी जो रीजन रु. ओके, destruction of tropical forest. So कौन destruction of tropical forest, coral reefs, wetlands and other biologically rich landscapes is causing an alarming loss of species and a reduction of the biological variety and abundance that could severely limit our future options. So कौन जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नष्ट हो जाऊँगी धीरे धीरे कोरल रीफ्स गुराक मरी जाउछंती ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस वेटलैंड्स गुराक सुखी जाउची. ओके माने कौन लैंडस्केप्स गुराक डैमेज हो जाउची सब डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस हमको देखिया पई पाउची और जदिया आमे पोल्यूशन ऊपर कंट्रोल न आनिबा ताहले आम फ्यूचर जनरेशन पई किछि ऑप्शंस बंचिबो नाही. ओके, सो कौन जो कोरल रीफ्स हेले कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है बहुत अमाउंट रे कौन कंट्रीब्यूट करते ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो ऑक्सीजन लेवल पाई कि. ओके, तो एगुरा सब जो फॉरेस्ट गुराक धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होगापी लगुच जो फॉरेस्ट ऑक्सीजन माने कंट्रीब्यूट करने बहुत साहाय्य करे सेगुरा सब भी धीरे धीरे कमियापी लगे आमको एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत होचे. Many rare and enlarged species are threatened directly or indirectly by human activities. So like जो डोडो बर्ड सेटा एक्सटिंक्ट हो गला बहुत सारा एमती स्पीसीज अच्छी जो गुरा थ्रेटेंड हो जाउछ माने कौन डायरेक्टली एक्सटेंट हो जाउछंती डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज मनीष मानक एक्टिविटी द्वारा ही से माने डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो से माने लुप्त हो जाउछंती. In addition to practical values, aesthetics and ethical considerations suggest that we should protect this species and the habitat necessary for their survival. Then the toxic air and water pollution along with the mountains of solid and hazardous waste are becoming overwhelming problem in industrialized countries. So कौन जो toxic air flow होची वाटर पोल्यूशन जो कॉज होची ओके हजार्डस वेस्ट जो गुरा रिलीज होची कौन जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज मानकर बहुत प्रॉब्लम्स और इश्यूज देखिया पई से पई मिलुची. वी प्रोड्यूस 100 and millions
of tons of this dangerous materials annually. तो कौन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज मानकरे माने सेमान जो इंडस्ट्रीज अच्छी से टॉक्सिक एयर रिलीज होची टू द एटमॉस्फेयर वाटर पोल्यूशन कॉज करचंती जो सीवेज हरिका सेगुरा सबू से कि एनुअली माने मिलियन टन्स ऑफ ओके डैमेज कॉज करुची टू द एनवायरनमेंट. No one wants this noxious stuffs dumped in their own backyard. तो केही भी चाहती नहीं निज बैकयार्ड माने निज लैंड रे कि टॉक्सिक जिनस पोतंतु कि डंप करंतु. बट टू ऑफेन द सॉल्यूशन इज टू एक्सपोर्ट इन समवन एल्स हेले आउ का लैंड रे कि आउ को जगह रे एरिया रे खेड़ा है कि पड़िथिबो ए सब टॉक्सिक गुराक टॉक्सिक स्टफ्स गुराक. We may come to a political impasse where our failure to dedicate where to put our waste or how to dispose of them safely with close down industries and result in the waste being spread everywhere. So कौन आमे गोटे एंतिया सिचुएशन रे अच्छु जोठी आमे फेल ही जाइछु डिसाइड करिया पई कि वेयर टू पुट आवर वेस्ट where to dump it or to dig and dump it or throw it like that. आमे फेल हो जाइछु एटा बुझिबारे कि हमको आम वेस्ट को गात खोली कि माटी भितर पुरेयार अछि कि ओपन एयर रे छाड़ दबार अछि. ओके ह्यूमन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. द हेल्थ इफेक्ट ऑफ pollution, toxic waste, stress and the other environmental ills of modern society have become a greater threat than infectious diseases for many of us in the industrialized countries. तो जो मैंने सब इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज रे रहउचंती सेमानंको पई हेल्थ डिजीज जेते इंपोर्टेंट नहीं सेते इंपोर्टेंट ही जाइची कि तांको एरिया रे पोल्यूशन अधिक होउची. ओके टॉक्सिक वेस्ट अधिक डिपोजिट हे जाउची से माने स्ट्रेस हे जाउचंती से एनवायरमेंटल इल्स को देखिकी. ओके से जेतिक अधिक हेल्थ डिजीज नहीं सेते अधिक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स मानकरे कंट्रीज मानकरे कौन अच्छी ना सेठिकार पोल्यूशन तांको पई कि बहुत टॉक्सिक प्रोड्यूस करूची. नेक्स्ट पैराग्राफ इज दिस एंड अदर सिमिलरली सीरियस प्रॉब्लम्स इलुस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस. तो एमिति ए सब जिनस सहित अन्य किछि कौन प्रॉब्लम्स कौन करचंती आमको देखौचंती कि एनवायरमेंटल साइंस रो इम्पोर्टेंस केते एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर एवरीवन. सो एनवायरमेंटल साइंस आउ एनवायरमेंटल एजुकेशन समस्तिंको पई बहुत इम्पोर्टेंट. एई सब एनवायरमेंटल इल्स कि एनवायरमेंटल जो टॉक्सिक गुराक आमको जणे दबा पई चाहुचंती कि आम पई कि एनवायरमेंटल एजुकेशन केते नेसेसरी. What we are doing in our world and what that may mean of our future and that of our children is of this and similar serious problems illustrate the importance of environmental science and environmental education for everyone. So एई भलिया कौन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सबू आमको जणे दबापी चाहूँ इलुस्ट्रेट माने कहवा जणे दबा थ्रू अ मीन्स ऑफ पिक्चर जणे दबापी चाहूँगी कि जो एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन आम मानक पई केते नेसेसरी. what we are doing in our world and what that may mean for our future and that our children is of paramount concern as we enter the 21st century. तो आमे जेहेतु 21st century रे अच्छु तो कौन एटा इम्पोर्टेंट कि आमे आम वर्ल्ड रे केमिति जीवु केमिति आम एनवायरमेंटल रिसोर्सेस को यूज करिवु आउ जोथि पई कि आम फ्यूचर जनरेशन एते मात्रा रे अफेक्टेड न हो. तो साइंस और होप्स कौन ना द डायमेंशनल लिटनी ऑफ problems we have just reviewed seems pretty overwhelming, does not it? तो आमे जो problems गुराक फेस करचु से गुरा कौन it seems pity. okay एमिति नुहे कि से क्वेश्चन रे पचाची. but is there hope that
we may find solution to this problem. आमे तो problem विषय जानिलु हेले सेंती किछि वे अछि कि सेंती किछि आशा अछि कि जोटा कि आमे ई प्रॉब्लम्स गुरा को ऊपर ओवरकम करि परिबा. We think so. Progress has been made in many areas in controlling air and water pollution and reducing wasteful resource uses. So कौन आमे देखिया पे पाइलु जे बहुत सारा एरियाज रे एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल को आना जाउची आउ वेस्टफुल रिसोर्सेस को यूज करिया पे कि अबंडन करा जाइची. ओके. Many cities in North America and Europe are cleaner and less polluted than they were a generations or so ago. तो कौन किछिटा सिटीज जेंती नॉर्थ अमेरिका हो यूरोप हो तो कौन से सबू सिटीज गुराक एबे बहुत क्लीन हो गलानी तांको पूर्व जनरेशन ठारू. पॉपुलेशन हैज स्टेबलाइज्ड इन मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज. तो जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज गुराक अच्छी से पॉपुलेशन कंट्रोल को आसीगलानी एंड इवन सम वेरी पुअर सिटीज वेयर social security and democracy have been established. तो पुअर सिटीज मानकरे भी एबे social security आसीगलानी democracy आसीगलानी. Okay, over the last 20 years means 2 decades. So over the last 20 years the average number of children born per woman worldwide has decreased from 6.1 to 3.4. तो कौन number of children born per women माने कौन बर्थ रेट टा 6.1 रु 3.4 जाके डिक्रीज हो जाइए. दिस इज स्टिल अबव द जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 2:1. एटा जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रेशियो जोटा कि 2:1 ओके थारु अधिक बट ऑल्सो बहुत चेंजेस आसी रेशियो growth rate of 2:1 children per couple, but it is an encouraging improvement. बहुत भलो improve ହେଇଛି. If this rate of progress continues in the next 20 years as it has in the past 20, so the world population could stabilize early in the 21st century. So कौन जो प्रीवियस 20 इयर्स रु जेंती आमे ग्रो करी चलचे कि बर्थ रेट डिक्रीज हो जाइछि तो सेमिति जदियो आम आगामी 20 वर्ष रे आमे करिबा देन आम पॉपुलेशन टा स्टेबलाइज हो जिवो. ओके. सो देन कम्स द 13th paragraph. The incident of the life threatening infectious diseases has been reduced sharply in most countries during the past century. सो कौन जो थ्रेटनिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस इन्फेक्शंस होतला से गुरा भी कमी जाइए व्हाइल द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज नियरली डबल. तो एवरेज जो लाइफ आम एक्सपेक्ट करूले सेटा लाइफ स्पैन टा इंक्रीज हो जाइए. मेनी न्यू रिसोर्सेस हैव बीन डिस्कवर्ड एंड मोर efficient ways of using existing supplies has been invested that allows us to enjoy luxury and convenience that would have seemed miraculously only a few generation ago. तो कौन आमे आम रिसोर्सेस को ठीक भाव रे एक्जिस्टिंग रिसोर्सेस को माने गोटे यूजफुल वे रे यूज करबा सिखि नेलेनी हैला. Although modern life has many stress and strains, few peoples would willing return to the condition they existed 10,000 or even 100 years ago. Would you? तो जेहेतु आम लाइफ रे बहुत सारा स्ट्रेस अच्छी स्ट्रेन अच्छी तमें कौन जीवाई चाहिए माने कौन 10,000 1000 कि 100 वर्ष पुराणा को. वुड यू? सो स्टिल वी कैन डू मच मोर. आमे बहुत इम्प्रूव कले हेले आमको आहुरी भी इम्प्रूव करिबार अछि बोथ इंडस्ट्रियली एंड कलेक्टिवली माने इंडिविजुअली बोथ इंडिविजुअली माने आमे निजको निजे बहुत सुधारिबार अछि आ कलेक्टिवली आमे एकाठी हेकि भी बहुत चेंज करिबार अछि टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर आवर एनवायरनमेंट. आमे आम एनवायरनमेंट पई इंडिविजुअली भी ग्रो करिबा दरकार आ कलेक्टिवली भी स्टेप नै कि आम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिया दरकार. Being aware of the problems we face in the first steps towards finding their solution. तो हमको अवेयर हवा दरकार
जो प्रॉब्लम्स आम फेस कर इन द फर्स्ट स्टेप आउ सॉल्यूशंस को खोजिबा दरकार. Increased media coverage has brought environmental issues to public attention. जो public माने aware नथिले environmental pollution कौन problem कौन होची हैला. तो जो media रो use social media आसीची से कौन media coverage द्वारा कौन होच ना बेसी लोक जानिया पे पाउचंती लाइक थ्रू टीवीज रेडियो हरिका से सब. Then, more than 80% of the Americans polled in the public opinion survey agree that the protecting the environment is so important that requirements and standard cannot be too high and continuing environmental improvements must be made regardless of cost. सो अमेरिकन्स माने कौन पोल कले गोटे सर्वे होता से से कौन कहले कि एनवायरमेंट रो प्रोटेक्शन होची बहुत इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट. ओके से किछि कॉस्ट हो हैला मैटर करे नहीं जेते एक्सपेंस से कॉस्ट हो से माने कौन कलेक्टिवली दबा पे राजी हेले से मानकर गोटे मोटो कौन माने गोटे एम कौन कि to protect the environment. Okay, this growing understanding and concern are themselves hopeful signs. तो ये जो गोटे concern माने ये जो गोटे understanding ये अतकी growing people को भितरे एटा गोटे hope pro sign. Okay, young people today may be in a unique position to address these issues because for the first time in the history we now have resources, motivation and knowledge to do something about our environmental problems. तो आगो अपेक्षा एबेका जनरेशन बहुत बेटर भाबे बुझी पारिबो कि एनवायरमेंटल रो प्रॉब्लम्स कोन आ आमे ताकू केंति टैकल करबा तार सॉल्यूशंस केंति काढिबा काइना आम पाखरे एबे बहुत सारा रिसोर्सेस अछि, मोटिवेशन अछि, नॉलेज अछि. ओके अबाउट द एनवायरमेंट. Unfortunately, if we don't act now, we may not have another chance to do so. आमे जदियो एबे कौन करिबा ना आमे जदियो एबे एई प्रति एक्शन किछि न नबा एई प्रति किछि एक्शन न नबा ताहले आमे आगु को आउ किछि करि परिबानी चांस पाइबानी किछि करि परिबा पई. So thank you for watching this video and have a nice day ahead.